The Indian Constitution is too legalistic and very complicated. Indian Constitution is very legalistic, ainigata, and very complicated. They opined that the legal language and the phraseology adopted. In the context, S.K. Maheshwari, a member of the Constitutional Assembly, observed the draft tends to make people more litigious, more inclined. Complex document same sir. Ivor Jennings कहते जे lawyers paradise कहते से. P.R. Deshmukh, another member of Constitutional Assembly, कहते I should however like to say that draft of the articles that have been brought anagala before the House by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. Constitution, a law dealing with Constitution hardly uses much of paradise of lawyers कहते कि आइवर जेनिंग्स कहते एलिफेंट साइज कहते कि too bulky and too detailed and contains some unnecessary element. Other का जिनसे अच्छी सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं. A British Constitution observed that the constitutionalist माने संविधानिक विशारद provision borrowed were not always well selected no. जो provision सब आस्ताला. Constitution generally speaking was too long, लंबा and complicated. लंबा और जटिल. H.B. कामत, a member of Constitutional Assembly, comment करते the emblem and the comment करते our assembly is an elephant. It is perhaps in consonance the bulkiest that the world has produced. Motta. He also said, I am sure the House does not agree that we should make the Constitution an elephant and one. A carbon copy की कहते 1935 Act. British कहते the farmers of the Constitution have included framer जो माने framer तैयार करते large number of provision of the Government of India Act 1935 into Constitution आनिଛନ୍ତି. Hence they call Constitution as a carbon copy of 1935 Act. Amend a version of 1935 Act. Example, N. Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language, भाषा in substance a close copy of Act of 1935. N. Srinivasan कहते and said they कहते Constitution derives directly from the Government of India Act 1935. Provision copy is almost textually. Further, P.R. Deshmukh, a member of Constitutional Assembly, commented करते that the Constitution is essentially Government of India Act 1935 un-Indian or anti-Indian. According to critics, Indian Constitution is un-Indian or anti-Indian because it does not reflect the political tradition, राजनीतिक परंपरा and the spirit of India. They said that the foreign nature of the Constitution makes it unsuitable to the Indian situation को अनुपयुक्त unworkable in India. In this context, K. Hanumanthaya, member of the Constitutional Assembly, commented करते who entered the music of a Veena or Sitara, but here we have the music of an English band or music ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ. That was because Hanumanthaya कहते कार्बन कॉपी N. Swaminathan, N. Srinivasan कहते an un-Gandhian Constitution according to critics, Indian Constitution is un-Gandhian because it does not contain philosophy nahi and ideals of Mahatma Gandhi, father of the Indian nation. They opined that the Constitution should have been raised and built upon a village panchayat and district panchayat. In this context, same member of the Constitutional Assembly K. Hanumanthaya कहते
That is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want ଚାହିଁନଥିଲେ and did not T. Prakasham, another member of the Constituent Assembly, attributed କରିଥିଲେ lapse of Ambedkar non-participation in the Gandhian movement. Ambedkar participate କରିନଥିଲେ Gandhian movement ରେ and the antagonism towards the Gandhian's idea. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆର ସେ ସବୁ against ଥିଲେ. So an un-Gandhian constitution. Constitution should have been raised and built upon village पंचायत ଉପରେ ଆଉ district पंचायत. पंचायत राज सिस्टम ଆସିଲା କେବେ 73rd amendment ରେ ଆସିଲା. So they said about the un-Gandhian concept, un-Gandhian constitution, because Ambedkar wrote ଲେଖିଥିଲେ. Criticism, broad constitution ମାନେ critics opined ମତ ଦେଇଛନ୍ତି that the Indian constitution contains new and original. Borrowed constitution or a bag of borrowings. ଧାର ଅଣା ହେଇଛି bag of borrowings or a hodgepodge constitution. Patchwork. ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇଛନ୍ତି or several documents of the world constitution. World ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର constitution ସବୁ ଆସିଛି. Criticism is unfair and illogical because framers of the constitution made କରିଥିଲେ necessary modification କରିଥିଲେ in the features borrowed from other constitutions ଆସିଥିଲା for their suitable ଉପଯୁକ୍ତତା ପାଇଁ to the Indian condition ରେ at the same time avoiding their faults କୁ ମଧ୍ୟ avoid କରିଥିଲେ. While answering the above criticism, Assembly Dr. B. R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, କହିଥିଲେ one likes to ask whether there can be anything new in constitution. Framed at this hour, 100 years have rolled over. All rights. Habeas corpus. Habeas corpus is a Latin term which literally means to have the body. Body को produce करियो. Body of. It is an order issued by the court द्वारा to person who has detained another person. जो अन्य person को detain करती हो to produce the body of the latter before it. Produce कर the court then examine करियो the cause and legality of detention रो. Legality. It would set the detained person free. Detained person free होगा if the detention is found to be illegal. यदि illegal होना पड़े तो the writ is bulwark of individual liberty स्वतंत्रता against arbitrary detention. Arbitrary detention विरुद्ध रे individual liberty व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता. The writ of habeas corpus can be issued होगा. Habeas corpus टा issue होगा against both public and authorities. Private individual against both public authorities as well private individual विरुद्ध भी होगा. The writ टा होची on the other hand it is issued whether the detention is lawful ହେଇଥିବ. The proceeding is for contempt of a legislature of a court. Legislature court विरुद्ध भी ହେଇପାରିବ. Detention is by competent court द्वारा and detention is outside the jurisdiction of the court बाहर भी ହେଇପାରିବ. The writ on the other hand is not issue ହବନି ଯେ lawful ହେଇଥିବ ହବନି. The proceeding is for contempt of a legislature or a court ହେଇଥିବ for contempt of a legislature को विधान को सरकार को कि कोर्ट को यदि प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ହେଇଥିବ कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा यदि डिटेंशन ହେଇଥିବ and detention is outside the jurisdiction court रो jurisdiction बाहर यदि ହେଇଥିବ ताले ମଧ୍ୟ the writ on the other hand issue ହବନି. both public authorities as well as private authority individual ଭିତରେ ହେଇପାରିବ. Private individuals. Habeas corpus. Mandamus. Mandamus which literally means we command.
वी कमांड जोटा आम कमांड करवा आदेश देवा ये कमांड इश्यू बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल्स को कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को इश्यू कर आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज पचार दैट ही हैज फेल्ड हिज और रिफ्यूज मना कर टू परफॉर्म करने इट कैन ऑल्सो बी इश्यू अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी अगेंस्ट हो पारे सरकारी सर्वेंट ए कॉर्पोरेशन एंड इन्फीरियर कोर्ट की भी हो पार ए ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज उद्देश्य रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इश्यू हो पारनी प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट हो पारनी और बॉडी टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स टू एनफोर्स हो पार नहीं एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स यदि स्टैट्यूटरी फोर्सटा पजेस कर नथिबो when the duty is discretionary इच्छाधीन and not mandatory बाध्यतामूलक नुह ड्यूटीटा टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाध्यतामूलक कॉन्ट्रैक्चुअल सेटा भी हो एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर विरुद्ध हो पारनी अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विरुद्ध हो पारनी एक्टिंग कर एज इन पोस्ट थे प्रोहिबिशन लिटरल मीन्स हो टू प्रोहिबिट मना करेंगे द इश्यू बाय ए हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन और अनसर्पिंग ए जुडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस यदि पजेस कर जुडिक्शनटा बाद एक्सीडिंग कर जुडिक्शन हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट पर्यंत दस अनलाइक मैंडामस भली द डायरेक्ट एक्टिविटी प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी प्रोहिबिशनटा इनएक्टिविटी माने ठप करदेव निष्क्रिय कर अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जुडिशियली न्यायिक और अर्धन्यायिक इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ये अवेलेबल हेनी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगेंस्ट हेनी कोटा प्रोहिबिशन लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज ये कोर्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज नुह सर्टियोरारी इन द लिटरल सेंस इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड इट इज इश्यू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट हायर कोर्ट द्वारा टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को सर्टियोरारी ट्रिब्यूनल आइदर ट्रांसफर ए केस पेंडिंग अच्छी लेटर टू इटसेल्फ और क्वाश द ऑर्डर लेटर इन केस ऑर्डर को क्वाश कर देवाई परवर्ती समय सर्टियोराटा सेमती हो कौन इट इज इश्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुडिक्शन एक्सेस जुडिक्शन इश्यू हो ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुडिक्शन जुडिक्शनटा एक्सेस हो अधिक और लैक ऑफ जुडिक्शन यदि जुडिक्शन अभाव थी निजर एरिया बाहर बा एरिया अधिक बा कम एरर ऑफ लॉ जदि भूल थी दस अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव प्रतिरोध सर्टियोरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज सिक्योरिटी प्रतिरोध और क्यूरेटिव रिवर्सल द रीट ऑफ सर्टियोरारी कुड बी इश्यू ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विरुद्ध नुह हाउएवर 1991 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड करथिला सर्टियोरारी कैन बी इश्यू इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो पार अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अधिकार क्षुण्ण कर लाइक प्रोहिबिशन सर्टियोरारी इज आल्सो नॉट अवेल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज अगेंस्ट जदि प्रोहिबिशन हो लेजिस्लेटिव विरुद्ध हेनी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज प्रोहिबिशन बॉडी सर्टियोरारी नॉट अवेलेबल हेनी प्राइवेट इंडिविजुअल साधारण लोक प्राइवेट लोक विरुद्ध कोवारंट इन द लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट व्हाट अथॉरिटी कौन अथॉरिटी अच्छी इट इज यूज बाय द
कोर्ट टू इनक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस जड़े पर्सन जो क्लेम कर दाबी कर लीगैलिटी दाबीर लीगैलिटी पब्लिक ऑफिस की मीन्स इट प्रिवेंट्स इलीगल असरपेशन और पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन यदि इलीगली होल्ड कर पब्लिक ऑफिस की रिट कैन बी इश्यू हो पार ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड सृष्टि करथिबा बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा इट कैन नॉट बी इश्यू इन द केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस इट कैन नॉट बी इश्यू हो पार नहीं इन द केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस मिनिस्ट्रियल ऑफिस अगेंस्ट हो पार अनलाइक द अदर फोर रिट्स sought by any interested person द्वारा हो पार not necessarily by the aggrieved person interested person not necessarily aggrieved person द्वारा नहीं आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 हूँ एम्पावर द पार्टी पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट कर अब्रोगेट कर बंद कर दो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस सैन्य मानी पारामिलिटारी फोर्सेस पुलिस फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालॉगस फोर्सेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन होची लक्ष्य टू एंश्योर करियो द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज करिया पई और द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम डिसिप्लिन मेंटेन करिया पई द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 लॉ तैयार करियो इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट को नॉट स्टेट लेजिस्लेचर को दिया नहीं एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट तैयार कर परियो कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट रे कर परिबनी द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यदि फंडामेंटल राइट्स को क्षुण्ण करिवो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैज एनैक्टेड द आर्मी एक्ट करथला 1950 रो नाभी एक्ट 1950 को द एयरफोर्स एक्ट 1950 द पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स 1966 रे द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट दिस इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन द फ्रीडम स्वाधीनता ऑफ स्पीच पार्लियामेंट हैज एनैक्टेड करथला आर्मी एक्ट स्पीच राइट अधिकार टू फॉर्म एसोसिएशन एकाठी हेबे राइट टू मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन करवा और पॉलिटिकल एसोसिएशन राजनीतिक एसोसिएशन राइट टू कम्युनिकेट विथ द प्रेस सहित कम्युनिकेट करिया राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग अटेंड करिया और डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करिया द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस आल्सो कवर्स सच एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म फोर्सेस एज बार्बर्स कार्पेंटर्स मैकेनिक्स चौकीदार कुक्स बूट मेकर्स टेलर्स हु आर नॉट कम्बाटेंट द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस आल्सो कवर्स आपको मध्य चौकीदार कुक चौकीदार बुटमार्क से समस्त ऑल पार्लियामेंटरी लॉ एनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन आल्सो एक्सक्लूड इन द कोर्ट मार्शल इंक्लूड कोर्ट मार्शल नो ट्रिब्यूनल एस्टाब्लिश अंडर द मिलिटरी लॉ कोर्ट मार्शल पे अछि कोर्ट मार्शल हो पारे जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एक्सक्लूड हो पारे इनक्लूड नो कोर्ट मार्शल रिजुडिशन जीवेनि ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स सो फार द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट पे जाई परिबे नहीं मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया विद इन द टेरिटरी मध्य इंडिया रे एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify and government servant को or any other person for any act done by him in connection with the maintenance restoration of order आईन श्रृंखला इन एरिया where martial law was in force रे parliament can also validate कर परियो any sentence pass punishment एवं दंड inflicted for future order act of indemnity made by the parliament cannot be challenge हो परिबनी यदि पार्लियामेंट कौन सी एक्ट पास करते हो फॉर पनिशमेंट सेंटेंस एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यदि फंडामेंटल राइट एनी कॉन्ट्रावेंशन हम ताले ऑन द ग्राउंड ऑफ कारण भी चैलेंज हो पारे मार्शल लॉ हूँ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ आसला
Martial law has not been defined anywhere in the constitution. Nahi. Literally it means military rule ta कहते. It refers to a situation where civil administration is run by the military authorities. Civil administration मध्ये military authority द्वारा according to the own rules, regulation framed outside the ordinary law. Ordinary law बाहर है. Suspension of ordinary law suspension is government by military tribunals. Military tribunals द्वारा. It different from the military law that is applicable to the armed forces. Military law is applicable to the armed forces केवल. Military law to different martial law. There is also no specific or expression provision of the constitution that authorities the executive to declare martial law କରିପାରିବେ. It is implicit in Article 34 ଅଛି under the which martial law can be declared in any area within the territory of India. The martial law is imposed under the extraordinary circumstances like war, युद्ध, invasion, बाह्यशत्रु, intrusion, invasion, insurgents, insurrection, rebellion, विद्रोह, riot, दंगा or any violent resistance, हिंसात्मक resistance to law विरुद्ध रे. Its justification is to repel force by force, maintaining a restoring order. During the operation of martial law, military authorities are vested with abnormal powers. असाधारण पावर दिया जाए to take all necessary steps नहीं परिवे. They impose restriction and regulation on the rights of the civilians. Can punish the civilians. Can punish the civilians and even condemn them to death. तो दोषी साबित कर परिवे to death दे परिवे. Civilians को punish कर परिवे. Even condemn them to death. The Supreme Court held that the declaration of martial law does not suspension of the writ of habeas corpus held that the declaration of martial law under Article 34 different from a declaration of a national emergency. Under Article 352 under the differences between two are summarized. Article 35 होची. Supreme Court held that the declaration of martial law does not in the suspension of the writ of the habeas corpus. Martial law suspension of writ of habeas corpus ହେଇପାରିବନି. Habeas corpus लागू the declaration of martial law under Article that different from the declaration of the national emergency टा अलग. 352 the difference between two are summarized. Restriction नहीं परिवे. 35 होची lays down the power to make law affecting fundamental rights. To give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliamentary, not in state legislature. Fundamental rights shall vest is parliamentary, not in the state legislature है नहीं. Fundamental rights shall be vest only parliamentary fundamental rights अच्छी. Lays down that power to make laws माने fundamental rights विरुद्ध law करिया पे can parliament. This provision ensures that there is uniformity throughout the India अच्छी with regard to the nature of those fundamental rights. Fundamental rights nature rights and punishment for their infringement. Article 35 contains Parliament shall have a legislature of the state shall not have power to make law କରିପାରିବ. Prescribing residence as a condition for certain employment ପାଇଁ or appointment ପାଇଁ in state or union territory or local authority or other authority. Article 16 ଅଛି. Prescribing residence ଅଛି as condition for certain employment ପାଇଁ. Article 16 रे empowering court को other than the Supreme Court and the High Court issue direction ଦେଇପାରେ order and writ of all kinds of enforcement. Supreme Court issue direction ଦେଇପାରିବେ orders writs of all kinds of enforcement fundamental rights ପାଇଁ. Restricting the abrogating the application of fundamental rights restrict to member of armed forces and police forces ମାନଙ୍କୁ restrict କରିବ.
सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट बाद इश्यू डिरेक्शन करेंगे कौटा आर्टिकल 35 अच्छी order and risks of all kinds of enforcement indemnifying any government servant को or any other person को for any act done during the operation of the martial law in area मना करियो ये government servant any other person for any act कर परिनी parliament shall have any and the legislature state not have powers to make law कर परिनी for prescribing punishment दे परिनी for those acts that are declared to be offense under the fundamental rights offense दंड घोषणा कर under the fundamental rights untouchability trafficking in human beings and forced labor ପାଇଁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର जो kidnapping trafficking forced labor ପାଇଁ past make कर period to law for prescribing punishment दे period for those act offense घोषणा कर परिबे untouchability और trafficking in human beings other parliament shall after the commencement of the constitution make law करिछि for prescribing punishment for the above acts ପାଇଁ obligatory on the part of parliament to enact such law thus making it बाध्यतामूलक any law in the force of the commencement of the constitution any law it should be noted that article 35 extend ହେଇଛି the competence of parliament to make a law କରିପାରିବ matter specified above यदि some of those matters may fall within the sphere of the state legislature ଥିଲେ ମଧ୍ୟ parliament को law କରିପାରିବ to every citizen right to acquire କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର hold any dispose of property article 31 other hand guaranteed କରୁଛି to every person को whether citizen or non citizen को right against deprivation of the property वंचित होगा ପାଇଁ it provided that no person shall be deprived वंचित होबनी except by authority of law it empower the state to acquire or requisition public purpose it should provide for payment of compensation amount to the owner payment of compensation payment provide करियो